Assalamualaikum dear students, how are you all? I hope all of you are doing good. Today we will do long question answers and fill in the blanks of chapter number 2 inside a computer. We have done short question answers of this chapter, so today we will do long question answers and fill in the blanks. Now moving towards our today's task. Question number 1 is, what is the function of CPU? CPU के कौन से functions है जो वो perform करता है? Its answer is CPU receives information from input devices, then process it and give results to the output devices. क्या फंक्शंस हैं CPU के? सबसे पहले वो कोई भी इंफॉर्मेशन इनपुट डिवाइसेस से रिसीव करता है. इनपुट डिवाइसेस कौन से हैं? कीबोर्ड और माउस. दीज आर द इनपुट डिवाइसेस जिनके थ्रू हम कोई भी इंफॉर्मेशन या डाटा किसी भी फॉर्म में, टेक्स्ट की फॉर्म में या ग्राफिकल फॉर्म में कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं. तो CPU सबसे पहले इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, लेता है किससे? इनपुट डिवाइसेस से. उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है. प्रोसेस मीन टू परफॉर्म सम ऑपरेशंस ऑन दैट इंफॉर्मेशन. उस इंफॉर्मेशन के ऊपर जो भी कमांड्स या ऑपरेशंस अप्लाई करने होते हैं वो अप्लाई करता है. एंड गिव रिजल्ट्स टू दी आउटपुट डिवाइसेस. और एंड में क्या करता है? जो भी उस प्रोसेस के बाद जो रिजल्ट्स आते हैं उस इंफॉर्मेशन के, उनको आउटपुट डिवाइसेस को शो करवा देता है. लाइक what are output devices? This monitor is an output device, and speaker, these are the output devices. Printer is an output device. So क्या करता है CPU एंड में? रिजल्ट्स आउटपुट डिवाइसेस को शो करवा देता है. सो फंक्शन ऑफ CPU इज CPU receives information from input devices, then process it and gives result to output devices. Next question is, how many units does CPU has? Name them. CPU has 3 units and their names are arithmetic logic unit, control unit and memory unit. Arithmetic logic unit को हम ALU भी कहते हैं, control unit को हम CU भी कहते हैं and memory unit को हम MU भी कहते हैं. तो CPU के 3 units हैं, arithmetic logic unit, control unit and memory unit. अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का क्या काम है? ये अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है. व्हाट आर अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस? दे आर मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस. अरिथमेटिकल ऑपरेशंस आर मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन. दीज आर अरिथमेटिक ऑपरेशंस. एंड लॉजिकल ऑपरेशंस आर कंपैरिजन ऑपरेशन. लाइक in these operations we compare two values or two things, like equal, like two values are equal or not, they are, one is greater than or less than, like this. Second one is control unit. Control unit controls all the overall activities of computer or CPU. And last one is memory unit. Memory unit stores data, जिसमें हम डाटा या कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, दैट इज़ मेमोरी यूनिट, जो कि मेमोरी डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इज़, व्हाट डू यू नो अबाउट हार्ड डिस्क? हार्ड डिस्क इज़ यूज्ड टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा. इट इज़ मेड ऑफ राउंड मेटल प्लेट्स एंड इट वर्क्स वेरी फास्ट. हार्ड डिस्क क्या है? ये स्टोरेज डिवाइस है जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर कर सकता है. इट इज़ मेड ऑफ राउंड मेटल प्लेट्स. ये राउंड मेटल प्लेट्स से बना हुआ होता है, गोल मेटल की प्लेट्स से बना हुआ होता है. एंड इट वर्क्स वेरी फास्ट. और इसकी जो स्पीड होती है वो बहुत फास्ट होती है. सो हार्ड डिस्क इज़ यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा. इट इज़ मेड ऑफ राउंड मेटल प्लेट्स एंड इट वर्क्स वेरी फास्ट. हार्ड डिस्क जो है ना, इट इज़ अ स्टोरेज डिवाइस. ये डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और ये लार्ज कैपेसिटी, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, लार्ज होती है. वी कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इन हार्ड डिस्क. Now come to fill in the blanks. Blank number 1 is, a motherboard is a dash circuit board. A motherboard is a printed circuit board. Here the blank is printed. A motherboard is a printed circuit board. Blank number 2 is, dash is the most important part of computer and CPU is the most important part of a computer. Here the blank is CPU, Central Processing Unit.
CPU is the most important part of a computer. Third one is a CPU receives and transfer dash. A CPU receives and transfer information. Here the blank is information. A CPU receives and transfers information. Fourth one is dash controls all the activities of computer system. Control unit controls all the activities of a computer system. Which unit controls all the activities of computer system? Control unit. Control unit controls all the activities of computer system. And last blank is hard disk is a dash device. Hard disk is a storage device. Here the blank is storage. Hard disk is a storage device.